वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद्र जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 नवीन जीमोद समानवर्णं रत्नोल सदकोन्दर शोभिकर्णं महाकिरीटा ऊनपर्णं शिराधिका कृष्णमहं नमामि निधाय पाणिर्तेन वेनं निजादरे शेखर्यातरेण निनादयन्तं तौ करेणं शिराधिका कृष्णमहं नमामि विशुद्धे मोज्ज्वलपीतवस्त्रं हता
तं च विनापि सहस्रं कीर्तिकृतानेकशुराद्र्यस्त्रं शिराधिका कृष्णमहं हि अधर्मति स्यादिदशानुपालं सधर्मवैरासुरसङ्गकालं पुष्पादिमालं व्रजराजबालं शिरा अहं नमामि गोपीप्रिया रामतराशकेलं राजेश्वरी रञ्जनकृत्प्रहेलं स्कन्दोरसदकं नचेलं शिराधिका कृष्णमहं नमामि वृन्दावने प्रीत्यतया वसन्तं निजाश्रितानां तरन्तं गोपीरभिनन्दयन्तं शिराधिका कृष्णमहं नमामि विसन्मन्मतदर्पहारं संसारी जीव सारं सदैव सतपुरुषशोक्यकारं श्रीराधिका कृष्णमहं आनन्द्यात्मा व्रजवास्तितोकं नन्दादिसन्द्रश्रितदिव्यलोकं विनाशिता दिव्यशोकं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि। कहूँ भक्ति भारने अर्ज माहरी और माधरो विपति माहरी श्री हरि हरो अवरासरो माहरे नथी सर्व जानने सुकहूँ कथी कटन काढ़ माया पछोदनी सुखल सामरा मुक्त नामनी अमरनापति आसता हरि रसिक राख जो हरि कण
भारत पार छो सर्वना प्रभु दीन दयाल छो विश्वना विभो विमल मूर्ति और माधव नजरती प्रभु दूरनाथ सो अधिक त्रासने तोड़ी नाखजो ब्रह्मानंद ने राखजो आधासने वाला पास राखजो चरण शीश नमाओ नोतम लीला रे नारायण निगाओ मोता मुनिवरे कर करी मने जेने काजे रे जाय वन्ने आसन साधी रे ध्यान दनी ने दारी जेनी चस्ताने स्नेह करी संभाले स्वभाविक ने पुरुषोत्तमनी सुंदर सचनी रे भीख मदारे जमनी गाओ है तेरे हर चित संभारी पावन कर जोरे इस स्वभावे रे बेटा हो रे जाने तुसने मारा रे कर ले फिर वे त्यारे रम मुझ करता रे तिमने रूपारा कोहली जन्नी ने मांगी नहीं ने मारा भिवनी राखी ने बब्बे मांग कर जोड़े फिर वे तानी रे तोने बातों करे रे रमुचकनी ने हंसना भेरी करी रे मारा कर्मा गस्ता क्या रख मीची रे नेत्र कमन स्वामी प्रेमान के रे तेरे बो नामी सामसये रे लीला नन्ना घरनी सुंदर सुखरू रे आपे सुसा घरनी नेत्र कमन रे क्यारे ध्यान दरी ने से जीवन बाने क्यारे चमकी रे ध्यान करता जागे जोता जीवन ने जमा बुलंदुक भागे पोता जागर रे सवा भलाई बेसे संधई जन्ने रे रे छे ध्यान दरी ने रे बेटो हेरी पोते संधई जन्ने रे थुमन थाय जोते साधु कीर्तन रे गाय बजारी वाजा तेमने जोईने रे राजा तेमनी बेना रे जबकि बजारी गाय संधई जन्ने रे निर्खी राजी थाय क्यारे साधु रे गाय बजारी ताली भेरा गाये रे आग्र साधु ने कीर्तन गाए जाने पोता आग्र रे कदम चाय त्यारे पोते वर्तारे है वो नामी कस्ता आवे रे प्रेमानंद स्वामी मनुष्य लीला रे करता मंगलकारी बक्स बामा रे बेटा बाबा हानी जिने चौथा रे कसकती घेर मेरा ज्ञान रे धर्म से जय भक्ति ते संबंधी रे वार्ता करता बड़ी हरी समझावे रे सुकारी अंग सांख्या ने पांच वेदांत शासानो ने रस खाए करी खान क्या ने खाई जने देश देश ना आवे सब ऊपर नवे जनी पोताना ने ज्ञान विनाशी तेने पूजा ने ज्ञान करने सुख राशि भक्त पोताना ने तेने शाम से जान ध्यान करावी ने खिंचे नारी प्राण ध्यान माती ने निजन ने धेमा लावे ने प्राण इंद्रिय मन संसभा मारे बेटो होए विनाश कोए जन्ने रे तेरो होए पास पीढ़ी अगली रे निर्जन निकली सान प्रेमान के ने भगवान मोहन नीनी ने लीलाती सुखानी आनंद आपे ने सुल्तान यानी न्यारी क्या रे बातों ने करे मनी वे सादे कुछ गुलाम ना रे अतिशित जानी रे हर गुलाबी तेने राखे ने आंखों ऊपर दामी क्या रे पोते ने नाची भमा होए बातों करे रे कलमा चाहे तो ये सामने की तने विचारे भुजवाया वे ने जवानों को त्याने हर्ष रावे रे पूजा करवाया वे तेना ऊपर बहु की जीरी सब कदा संभरता रे हरे हरे के बोले मर्मक थानों ने सुने मगते दोने भागा थानों ने जानक ने जमता रे बोला त्या स्मृति ने पोता नजर तेरी तोड़ू खस्ते ने भक्त समुद्र बीने भैनी नित्रे आनंद रस सावे लीला रस रे गावे साम सजनी ने दिवस रो मोराने कली चरित्र ने मनुष्य विग्रह दारी थे मनो ने मोर मर्ष जेवा रूपानुपम ने देवा क्या एक दो ये श्री श्याम क्या रे मैसे ने चाकल पूर्ण काम क्या रे घोड़ू रे ओचरे सहित पाद्र होए रे ते पर वैसे पीते क्या रे दो रे ऊपर तक क्यों वाणी ते पर मैसे ने दिवाली का नुक मैसे ने तकियो नई ने क्या रे गोथर ने बंद खेस ने क्या रे गराजी ने धाय दिशे आगे संधई जने रे बदमा गाड़ी क्या रे मादे ने लई मिले बे हाय चाती माई ने जनक मदे नाथ क्या रे कापे ने है तो लगे दानी क्या रे कापे क्या रे कापे ने प्रसादी न था प्रेमान के रे भक्त ने प्रतिपाले व करे चित पावन कहानी छुट्टी सत्काने घावने संभाले क्या रे जमने ने दांता रे दबावे दामे जमने ने पक्के सा स्वभाव ठीक जनावे रे तैने छिक खाया ने मुख परियारो ने नमु जानी ने हसे तिंग शाम मुख परियारो ने रूमा ने सुदाम क्या रे बातों ने करता तका देव थे रूमा ने वदेवानी देवती दयालु ने पदो खाड़ी रे पानी वो नाम ये नौकरी दखियो ने देखी न कमाई दया यानी रे अति आग्रह था यदन वर्ष रे आप ही उतार करना दसी रे
वाले दामे खम्बे ने खेसा सोनी नाखी चाले जमना ने कर्मारो नाखी क्यारेक बाबो ने ककेलू पर मेली चाले वालों ने रोहिणी निन्नी नकम ने लेकर हरी राय गाता सुता ने हर नाजी थाई सत स्वभावे ने उतावला बोचाले हित करी ने क्यारे गोरे ने चलो होय त्यारे क्यारेक सन्ने पर त्यारे त्यारे दामे ने खमे खिसने यानी खिसने बांधे ने खिस गाते ताने फिर से लाडू ने जय मिगन शाम जिस जमयानी ने फरे प्रगत माने वानवान माना संधई जन्ने ने पीर स्वाने का छंदा भक्ति ने यदि कनो पीर सना कोई नामुक माने आपे लालू हसा पाची नाती अतन कनवाने उतनी तेवाने नवा में से ना पलाटी वानी गले कशोरे तोरे वनवानी कोने वसने कनी शैने लुए प्रेमान क्याने हजर सेवे जोए डूना सोबेने नई नियोवा होय वसपे दूने रोए पक्ष थाने ने लुइंग सारा पानी कोना खिसने ने पेंसरे पे तानी उड़ी ऊपरनी ने रेशमी कोनी वालो आवे जमारे चाले माती ऊपरनी ने ओडी में से जवा कानो गारा ने नाखी मुन्ने गावा जमता धाबा ने पंगनी पलाटी वाली ते पर धाबो ने ने नाखी उमर शाम ते पर जमनो ने कर मेरे सुदाम नुडी नी तेरे जमे देव ना देवारे वाले ने पांडवी नानी देव जन स्वादु ने जने जमता जमता पासे है जने जमता तेने आपी ने पची पोते जमे जमता जीवन रे है जने मन गमे फेवे जमता ने पेट पर या तो खाए रो करे ने मोल तृप्त थईने दाने को तेरे पानी लेने मुकस लेने ने दोलिए विराजे पूजा करने ने हजन हेते जाजे पापनो परे आदोले ले बेलो फेटो बांधी ने पीछे वर्षालो तूने ने शरत ने जाने गिला नीना ने निमने वखानी संथे जन्ने ने लेंगन चावना बंदाने ने गेले पूना का बोझ खिदाने कता जमाना ही सुमतानी ने धन्य कीर्तन गाय ने भारा ने अरे बेसे ने घेरा वे रंगलेरी पावन यशने ने है जंगाता आवे जीवन जोने ने कर्पूर वासी ने जोने जगदार समर करे छे ने नवा नवा बीबी राजे ने असली बोना मी दोया ऊपर स्वामी नित्सवज्ञ ने सुखदेवा ने काश पोते प्रज्ञा ने पुरुषोत्तम महाराज फरिया माई ने मनम शशि उग्रतोने छाजे ब्रह्मश्वसी ने त्रुंट करनी जने पोरे रति ने जमी शब्द जने भयंगर्यो ने पीपेले बाल बचे ने उबी राखी फेरे सुता सुतारे मारा मागी ने जमने हाथे ने मने ने केनो नियम नो कोवनी ने सच भक्ति बनी ग्रामल पोना हमनी राय कोई जाने ने लाकर नी जाए त्यारे फटकी ने जागे सुंदर शाव कोचे पूछे ने सुखदा में भी लीला ने हनियत पार में तो गाई ने कई मंदिर साज को पीते ने मननो रे स्वामी राजी थाशे ओराया वो शाम स्नाई सुंदर वर जो वाला जिन कनी ने जीवन माला जीव माही प्रो वाला चिने रूप मंगनो यज्ञ सुरते संभालो निखी नौ तम्बारा और मायु तारो वाला अनंकम समझ गचरनी शमायती सारी वाला टेदोल करवाया तो राती मान भृति मानी वाला प्रथम ते चिगवान तीन वाला उधरे खायो पीरई अतिशय नवीन वाला अंगूठा अंगड़ी बचे तीनी श्री ने आविवा इनी बेग्यो ने जोता भक्त ने मन भावी वाला जुग शर्मा को न हचिन तेना नाम वाला शुद्ध मने करी समर्था नाश पामे का कोने उदवने खसस्तिक जामो जो वाला ब्रजा कुशकिन पन मजमने पगे न वाला चुन कलश ने गोबल सुंदर दानुषने मी व्यम साचे दामे पगिची जमना पंगना अंगूठाना ना कमाही चीन वाला ते दोने खींच को भक्त प्रीति प्रवीण वाला है जंगूठानी पास तिलिंग नतम प्रेमान करनी को प्रीति प्राण लई वारो वाला हवे मारा वाला ने नई ने विसारो ने श्वासो श्वास नित्य सम परियों वाले सजानंद जी शुपानो रे अवे हूँ तो के मकरी राखी से चानो रे अवे मारे हरिवर वरवानु ए वर नामर कर छे नानो रे वर भाग्य विना नव भाव रे स्नेह लग्न विना रवै मन रे मने ते मके जोरे स्वामी मारा रुतियानी भीतर तो पूरन बरवी या मन निष्कुल नंदन स्वामी अवे मनवालन दर्शन सारो हरि जन आवे हजारे हे
विराज सजानंद पुरन पुरुषोत्तमयंतर बैठा मुनीना वृंदते माँ शोभे तारी विंत्यो जमा चंद्र दुर्ग पूरक यति भारी बेला रम्य साधु अने ब्रह्मचारी तारी पानी उपनती अति नलकत किन्यारी बागलड़ी में छोगली अति शोभे जोई जोई लोभे पधार वाला सर्वे ते सोए खना राशि सजान आमनवासी मांगी मारी जन्मो जन्म मनी कामे मर्या मन नंदन स्वामी बोले प्रभु सकल मुनि के श्याम स्वामी नारायण दिव्य मूर्ति स्वामी नारायण दिव्य मूर्ति संतन के विश्राम वाली जाओ संतन के विश्राम बोले प्रभु सकल मुनि के श्याम अक्षर परयानंद घन प्रभु कियो है भूपर धाम जय मिलत जन तर तमाया जय मिलत जन तर तमाया नतय अक्षर धाम वाली जाओ लतय अक्षर धाम बोले नीके श्याम शारद शेष महेश माम मुनि जपत जय गुण नाम जाश पद रज शीश धरि धरि जाश पद रज शीश धरि धरि होत जन निष्काम वाणी जाओ होत जन निष्काम पूरे नीके श्याम प्रेम के परियंक पर प्रभु करत सुखयाराम मुक्तानंद निज चरण दिग गुणामु गुण गावत आठु जाम हरि गुण गावत आठु जाम पूरे प्रभु नीके श्याम शामत में साचू नानो बीजो सर्वे दुखदायक जानो रे शामत में साचू रूढ़े तम भिन्न सुख संपत गावे रे तो सर्वे मां दुख उपजावे ते मकाम कोई नावे रे शामत में साचू नानो रे मूरख लोक मरे ठा संगे हारे सिर पटकी
ती मारी मन वृत्ति अतकी रे शाम तमे साचुनार कंदयलो तिक सुख सारू रे जोई जोई मन मोयु मारू आधन तमयु परवारू रे शाम तमे सा रे ब्रह्मत गीत लगी जोयु उठा सुख जानी ने वगोयु मुक्तानंद मन तम संग मोयु रे शाम तमे साच वंदु सजानंद रस रूप अनुपम सार ने लो जिन्हें वस्ता श्रुते फन करे पोपार ने लो समर्पक धर्म सुखधाम अनुपम नाम ने लो ने बब्रह्माति कुते बचे गजी काम ने लो जिन्हें अक्षर प्रेमी आधार पर कोई न ले लो जिन्हें से निम्नति कहे ले लो वन सुंदर उपनुप जगच्चने न मीरे लो नक्सिक प्रेम स्खीना नाथ रमार वीरे मोर मित्र तानी मूर्ति रे लो जगना खोल से नाट्री साई नहीं मूर्ति रे लो मन मर मोय मोहल्ला पंगली बात मारे लो सोचे कमर जोई कांत मारे लो डर के सुंदर बात जरूर आकलिया रे लो माता भर्म कर्म माते तिने मरा हरिया रे लो माता पकने बाने शाम कर मर कोड़िया रे लो किनार की जित मैं छोड़िया रे लो वरना बस की दी बजवा सब तरवाल मारे लो मम्मा तड़के जोवा काट के पीछे गाल मारे लो बस नस नमनी नात धर्मी मलाल छेड़े लो चमला प्राण कुरु कुर्बान जब जीव चारा छेड़े लो बीच तुरे चावता रे लो अब प्राण सुना बता रे लो वाते हस्रा चित बिजो हो नोग मेरे लो मम्मा प्रेम स्किन्ना ना कि तम के रे से जोई पारी को रुड़ी रे खावरी रे लो वा चाय चढ़ी रे लो वाते जमने बुझानी पास ते चाल छेरे लो वातर कंत चित्ते ले कनुपम सार छेरे लो मैं विघ्न हाय जोई ने नाथ रे लो वाते जानी प्रेमी जन जोई निद्या दरे रे लो रस जोई तमारो लो रसी चन गेरा नाना सुंदर में छेले नारे लो आतर बुझ जग जगदी चुंचोवाल ओ करना लड़का करता लाओ बार बार ले लो आतर आंगलियों नी ने खाना मैं जोई ने ले लो लाखों चोरी कोई ने ले लो आतर और मानो तब चाप जोन जीवा करो ले लो आमला है कना माई जमना अदर शुभ से नाथ जीने लो लावा प्रेम स्कीना प्राण मरो बड़ी बात जीने लो माता मृति तीरस रसिक जोइने जीवेने लो वाले रसना चाकना हाय चास्ते नव पीवेने लो मतलब शाम मन मन भावता रे लो रामा मंदिर जीव प्राण स्ने बोलावा माता रूपम रूपम गौर मृति मन माग मेरे लो वाले जो वाट काट की से चने ऐसे नाजी रे में मिक्करी बोलता रे लो लावा प्रेम स्कीना से दौलता रे लो माता रूपम नाथ शोभा गणी रे लो तेवड़ी जो सुंदर छे लवनियम बनी रे लो मतियती गोल छे रे लो कंतन जोई रे तादव राय के बन गचो लो माता जंगनी शोभा मम्मा जोई रे लो वाजनी खोपड़ी ने पानी कोई ने नव खोले लो माता चल कमन्यु ध्यान ऋति है तुम्हारे लो लावा प्रेम स्कीना ना तुम्हारे लो माता जगत स्वरूप खानो वाला मारे लो वाती को साची चाल मारे लो जब नंगो ते कलक माची ने छेड़े लो वाला छेड़े आंगलियों तिले जो मंदी ने छेड़े लो नंगने तो जो कशी ने छेड़े लो वाला स्टोर चको जे बग जो प्रवीण कामाची तो करीवास ने लो मागे प्रेम की के जो दास ने लो मागे प्रेम की के जो जन्म दास ने लो अक्षरवासी वालो अवनी पर नव करती म स्वामी चतनाय चाले राज अक्षरवासी वालो अवनी पर आवी वाले सत्संग स्थाप्यो हानि जनने खोल कल्याण याप्यो राज अक्षरवासी वालो अवनी पर पांच मान पारे भाइयों ने भाइयों हरिजन संग की दी साची संगायो राज अक्षरवासी वालो भाइयों देखीने भाइयों चेतर चाल परी वस्तु कोई नी हाथ न डाले राज अक्षरवासी वालों
દેવાના દેવવાલો નામન ધામી પ્રગટ પ્રભુનું નામ સજાનંદ સ્વામી રાજ નવા શિવાલો આવ્યો માનનો વાલો આનંદકારી પોતાના જની વાલે લાજ ભંડારી રાજ ક્ષણવાસી વાલો ધર્મને લાલે મુને હેર બોલાવી એકતની વાત મનમે સમજાવી રાજ ધર્મને લાલે મુને બોલમયંદ બંધન કાપવયાવ્યા ધામ ધામના વાસી અહીં બોલાવ્યા રાજ ધર્મને લાલે હવે બોલ અક્ષર પાના શ્રી હરિ સંગે અને સાથે લાવ્યું મંગે રાજ ધર્મને લાલે મુને તે બોલાવી નવગ્રહ જેમાં મારો વિનાતમ થાય કરે કોટી કર્મનાશ ધર્મને લાલે મુને તે બોલાવી પ્રેમાનંદનો સ્વામી પ્રાણ સ્નેહી બંધ જીવને વાલે કરે વિવેના તે બોલાવી અધમુદારને પોતાનું નામ સત્ય કર્યું અજ શ્રી ઘનશ્યામના જનમુદારને જીવન શિવ કર્યા હે અમિત તારી પરપ્રતાપ જણાવી હદવાણી દામોદારને પોતાનું નામ વિન સદન સિંહ નાસ પમારી ન્યારી દેખાની રાજ ઉદારને પોતાનું નામ રવિ શશી તારા ભાષે માતા પિતા તેમાં શ્રી હરિ પાસે રાજ મુદારને પ્રેમાનંદનો સ્વામી પૂરણ પ્રતાપી પોતાના જનની સ્થિતિ લોકી કાપી રાજ મુદારને નામ સિને બટખો છો તમે ચંદ્ર સુજાન પ્રગટ પ્રભુની આજ કોનો ઓળખાણ રાજ સિને બટખો છો તામના ધામી ક્યારે નોતા પધાર્યા વિશ્વને કોતી સુધી કાઢીને હર્યા રાજ સિંહ અવસર પર કોઈ અવની આવે તો તે માયાની આએ કંઈ ન ફાવે રાજ સિંહને બટખો છો તમે સુજાન ગુણીને સંગે ક્યાંથી નિર્ગુણ થાય જ્યાંથી આવ્યા તેમાં પાંચ સમાયા રાજ સિંહને બટખો સુજાન આવો અવસર હવે ફરીને આવે પ્રેમાનંદતાની થઈને કાવે રાજ સિંહને બટખો છો તમે સુજાન સિંહને બટખો છો તમે ચતુર સુજાન સજાનંદ સ્વામી અખિયામાં નિંદરા બરાની રે પોરો પોરો સજા હમી હારે તમે માથેથી પાગાયું તારો રે પછી બનાતની ટોપી ધારો રે પોરો સજાનંદ સ્વામી હારે તમે જર કસી જામોયું તારો રે પછી કરી દોતી ધારો રે પોરો પોરો સ્વામી હારે તમે કેરનો પટકો છોડો રે પછી શાલ દુશાળાયો રે પોરો સજાનંદ સ્વામી હારે પોર્યા પ્રેમાનંદના સ્વામી રે જોઈ આનંદ પામી રે પોરો પોરો સજાનંદ સ્વામી અખિયામાં નિંદરા બરાની રે પોરો સજાનંદ સ્વામી In the seventh year, 1877, on the fourth day of the bright half of the month of Falgun, Shiji Maharaj was seated on a wooden bedstead laid on the platform in the darbar of Jinaba in Panchara. He had put on a white angarko and a white kish. One end of the headdress was left loose on his right. He had put on a white jacket and covered his body with a white cotton shawl.
Saints and devotees from various places had gathered before him in an assembly. After the evening prayers were over, Shiji Maharaj rested on a bolster and said, I want to ask a question to you all, the senior saints and devotees. A person may have love for God and may have faith in the path of morals, but if he is not in the habit of thinking, he will not consider the nicest sense objects of sound, touch, sight, taste, and smell equal to the ugliest sense objects or even worse. Now my question is, what sort of thinking a person should do so that he will consider the nicest sense objects equal to the ugliest sense objects or even worse? What is your idea treating all sense objects, good as well as bad, equally, or good objects worse than bad objects? This is my question to the senior saints and devotees. The saints and the devotees expressed their opinions according to their understanding. Then Shiji Maharaj said, I have heard all of you. Now I will tell you my opinion. Suppose we receive a letter from someone living in a faraway region. We can judge the intelligence of the writer from the letter, how his mind works. In the same way, we can know the nature and appearance of the devotees of God, like the Pandava brothers, Draupadi, Kuntaji, Rukmani, Satyabhama, and Jambavati, the senior queens of Sri Krishna and his son Sam from the Holy Scriptures, because they have described these devotees as if they were living before us. We can know about their mode of thinking also from the words put in their mouth. We can come to know from the epics like Mahabharata and other books of Puran that God is the cause of creation, sustenance, and dissolution of this universe. He possesses a divine form. If he were formless, he cannot be in a position to carry out all these activities. He cannot be said to be the doer if he were formless. Akshabram is his divine abode. He is full of luster and bliss. At the time of dissolution, all the souls, along with their casual bodies, are merged into Maya. And at the time of creation, God again gifts the souls with intelligence, senses, mind, and pran, so that they may enjoy sense objects of all types. Meanest, ordinary as well as the best, and may also endeavor to attain their final liberation. God created the sense objects as well as the means to enjoy them. Good sense objects are created to minimize the agonies caused by the bad sense objects. Just as a great rich man arranges for trees to be planted on both sides of a highway to cover them with shade, constructs water huts, starts almshouses, and constructs sarias for poor travelers. In the same way, God also created super sense objects for the happiness of deities like Brahma, Shiva, Indra, etc. These divine five sense objects are for the happiness of the lesser gods. And just as one can infer from the sarias and almshouse constructed for the poor, that the rich man must have exceedingly better comforts in his house. Similarly, the wise man knows that God also must have exceedingly better comforts in his divine abode. The happiness of his divine abode is far superior to that of lesser gods and human beings. And when the wise man comes to realize that the happiness of the divine abode of God is far superior, even the pleasant objects of senses seem painful to him. The happiness of the sense objects of this world experienced by humans, animals, deities, and evil spirits appears pleasant if it is associated with God even slightly. But the happiness to be found in the God himself is to be found nowhere else. It is like the torch burning before us. The light that the torch sheds at a little distance is not so bright as it is near the torch, and there will be no light at all at a great distance. Similarly, happiness to the fullest extent will be experienced only in the vicinity of God. Elsewhere, the happiness will become lesser and lesser as we go farther and farther from God. Hence, the person who is desirous of his liberation knows that he will find only misery if he stays away from God. His misery will grow according to the distance from God, and ultimately he will become extremely miserable. He knows that whatever little happiness he gets is due to his association with God only. Hence, he must develop closer and closer association with God. His happiness will be the greatest when he develops the closest association with God. A person can be called wise only when he endeavors to develop closest association with God, thinking as above for acquiring the happiness of God. The happiness of a man is greater than that of an animal. The happiness of a king is greater than that of a man. The happiness of deities is greater than that of a king. The happiness of Indra is still greater. The happiness of Bruspati is greater still. The happiness of Brahma is greater than that. The happiness of Vaikuntha is even greater. The happiness of Golok is greater than that of Vaikuntha, and the happiness of Akshardham is greater than that of Golok and all other abodes of lesser gods. Thus, when a wise man realizes the extreme happiness of God, he considers the happiness of sense objects to be insignificant.
The happiness of other gods like Brahma is nothing compared to the happiness of God. It is like the happiness of a pauper begging with an earthen bowl at the door of a millionaire. If I just compare the unbounded happiness of the divine abode of God with the meager happiness of other places, I would become depressed and would hanker to achieve the divine happiness of the abode of God after death. When I am enjoying the sense objects in the ordinary course of life, I just do not give much thought to it. But when we find some charm in those objects, I at once think of the happiness of God, and my mind immediately gets very much depressed. Only an intelligent man will understand my talks. I have great love and respect for an intelligent man because I am myself intelligent. Only an intelligent man will understand these talks as clearly as I do. My ideas are definitely more important than your ideas. Hence, always bear in mind my talks and hold them firmly in your mind. If one does not understand my talks properly, he will find it very difficult to withdraw his mind from the charms of the worldly objects of sense. And one who can understand my talks properly, it will not be difficult for him to withdraw his mind from worldly objects. He will clearly realize the worthless nature of those objects. My talks will be understood only by the persons who are more intelligent and who are greedy to achieve the supreme happiness of God. He knows that a paisa is more valuable than a kauri, and a rupee is still more valuable, and much more valuable is a gold coin. In Chintamani, the wishing stone is the most valuable. Similarly, the happiness of the divine abode of God is far superior to the happiness of the worldly sense objects. Only one who is intelligent will understand my talks and will be convinced of the truth contained in them. And one who is fully convinced of my talks will behave as if he is surrounded by abundant affluence and innumerable attendants. And though he may be alone in a forest, he will not think himself to be a miserable soul, and he will feel like being alone in a forest, even if he is in the midst of Indralok. He will not feel happy in spite of the luxuries of Indra. Rather, he will consider those luxuries to be worthless. Hence, you should think over these talks and make firm determination that you have to go straight to the divine abode of God. You should never be attracted towards the worthless joys of sense objects. Make such a firm determination now. I have explained my ideas to you and wish you to have firm faith in my words. બીજું બમરો અને ગીંગો બંને મિત્ર હતા. બમરો ગીંગાને કહે મારે ઘેર ચાલ, તને બહુ મજા આવશે. એમ અવારનવાર બમરો ગીંગાને કહે એટલે એક દિવસ ગીંગો કહે ભલે આજે તારે ઘેર આવવું એમ વિચાર કરી જવાનું નક્કી કર્યો. પણ ગીંગાને વિચાર આવ્યો કે આવી વિષતા જે મરની ગોળી ત્યાં નહીં મળે. તો એમ વિચારી ગીંગે મરની ગોળી નાકમાં ભરીને પમરે પાંખમાં બેસાડી સારો મજાનો સુગંધીમાન પુષ્પના બગીચામાં લઈ ગયા ને સુગંધીમાન પુષ્પ ઉપર ગીંગાને બેસાડ્યા ને બમરો ગીંગાને કહે કેમ આ સુખ બરાબર છે ને. ત્યારે ગીંગો કહે આ તારું સુખ પણ મારા જેવું છે. તે જાણી બમરે વિચાર કર્યો કે આ નાકમાં વિષતાથી ગોળી લાવ્યો હશે. એમ જાણી એ બમરે પાણીનો કુંડ ભર્યો હતો. તેમાં તે ગીંગાને જબોળ્યા એટલે નાકમાંથી વિષતાની ગોળી નીકળી ગઈ. એટલે ફૂલની બહુ જ સુગંધી આવી ને ગીંગો કહે ઓહો આ તો બહુ જ સારી સુગંધ આવે છે. તેના ઉપર શું લેવાનું કે ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ સુગંધીમાન પુષ્પ સમાન છે ને વાસના રૂપી વિષતાની ગોળી છે. માટે આપને વાસના રૂપી વિષતાની ગોળીને તારી ભગવાનમાં પ્રેમ કરવો. સ્વામી મહારાજની જય.